Yes. Your 1 minute preparation time starts now. Explain something about your house little bit. As soon as you enter, you see the living room, which has my piano in it, which I love to play a lot. And if you move to the left, you'll after walking for a few steps, you'll reach my personal room where I study a lot day and night. And if you take a right, you'll see our TV room where we often binge watch on movies and Netflix. And if you move further ahead, you'll find my parents' bedroom, and after that, we have a big balcony. And if you take a stair upstairs, then you'll reach a terrace. तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपने नेचुरल रिस्पॉन्स सुन लिया कि नेचुरल स्पीकिंग आपको कैसे करनी है। 1% भी इसमें क्रैमिंग नहीं है, सारे का सारा नेचुरल कंटेंट है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। अगर आपकी स्पीकिंग में बैंड नहीं ना आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको स्पीकिंग कैसे करनी चाहिए एग्जाम में। एक एक चीज़ आपके काम की है। मैं लास्ट में आपको फीडबैक भी देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, सारी वैल्यूएशन बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। What's your favorite room and why? I would say my favorite room is my own personal study room because it represents a lot about my personal self. And most of all, I like my study table there, which is a huge table. Like the table joins corner to corner wall, then has a huge light above it. And it creates a really great focus mood at night for me when I turn off the other lights in the whole house. The room I've I feel it represents me completely. Can you describe the view from your windows? Yeah, the view from my windows, first of all, gives me a clear view at the sky, and I truly enjoy looking outside the window through all seasons. And other than that, you get to see the clear sky. I often enjoy looking at the birds sitting outside through those windows. Can you And I also see the plants in my balcony. can you think about some of the major advantages of living in our own house in comparison to living in rented house? I believe that settling into rented houses is a much more vulnerable situation than having your home because people invest a lot in their own houses, like moving in furniture and getting a lot of renovation and work done in their houses. That is a better investment if you own a house rather than if you're in a rented accommodation because it is very temporary. You could have to move out anytime without even a notice sometimes. So it's very better to stay in your own house. Plus, it's something that you have over the years and you also pass down to your future generation. So it's kind of a heirloom for you. What kind of accommodation do you wish to have in the future? Accommodation, I want a basic sized accommodation because I truly don't want to spend much time indoors. And other than that, the most important thing that I would look for in that accommodation is the view and the study table. Let's talk about cinema. Did you usually go to cinema when you were a child? Yes, a lot. I used to watch a lot of movies when I was young. Ever since I was like 3 or 4 years old, my parents used to take me when I was too young, and they used to alternate in taking care of me because then I used to run around the cinema only. But since I started growing up a little, I started to sit down and actually watch the movies. I I really liked Tom Cruise movies, Mission Impossible series, and a lot of Shah Rukh Khan movies also. Do you still like the same kind of movies as you liked as a child? Mostly, yeah. My tastes have mostly remained same because I still follow up on the Mission Impossible series, which I did as I was when I was young. Do you think going to cinema is a good way to spend time with friends? I would say it's an excellent way to spend time with our friends because it's an opportunity to bond over something that you like, and discussing your thoughts about a movie can also help you a lot to get to know each other, I believe, in the future. Thank you very much. This is end of your speaking.
part one, and now we are going to move to speaking part two. I would like to give you a topic on which you have to speak about 1 to 2 minutes, and you have a minute to Okay. prepare for your response. Okay, so you can see the topic is right there on your screen, and Yes. your 1 minute preparation time starts now. Alright, so your 1 minute preparation time is over now. You may start speaking now and don't stop before until I tell you to stop. Today's topic is the time when I is my class grade 12 class assembly. It happened in near 15th August 2023, and it was my last class assembly in senior school. I was given the role to prepare a speech for 2 minutes on history of India and when we got freedom. And I had to speak in front of our whole school, all students from classes 6 to 12. That was about 500 to 600 people. But it was not a big deal for me because I had been doing it since I was in class sixth, as it is a ritual in our school to do so every year. But still, I was nervous and I wanted to deliver my speech as nicely as possible and as clearly as possible for my fellow classmates to understand. I gave this talk because we were doing an assembly on Independence Day only, and I believe that understanding the history of our country plays a very important role in it. So I was given one of the most important roles in the whole assembly. And when I went to deliver my speech, I felt a bit nervous, but I was very confident all throughout while I was delivering my speech. After that, I felt really great about it, and my teacher also was very satisfied with me, and the audience applauded for me also. All In right. the So end, thank you. yeah, Okay, thank you. Thank you very much. thank. Okay. Let's move on to have discussion in speaking part three. Let me Okay. ask you the first question. What benefits does the internet bring to the communication? Um, Internet brings a lot of benefits to our communication. First of all, it speeds up communication and it makes connections overseas also, which is a very big deal, I believe. Any other benefits? It could connect you anytime, with no matter day or night. It's 24-hour available service, which can help lessen the gap between loved ones anywhere on the globe. Hmm. Which is better, being a talker or being a listener? I didn't hear the question. Which option is better, being a talker or being a listener? Okay. I would say most of the times I myself would prefer being the listener because I really like to ponder upon views of other people, and I really like to collect different point of views, different perspectives on different pressing topics often on people. So I really like to listen to speeches also because of these reasons. So why not being a talker? Being a talker for the lesser number of times is better, but for majority of times I like to be the listener because it gives me a chance to sit down and listen and understand how other people think, what they are thinking about, and Hmm. it gives me a bit more time to groom my own thoughts and perspective towards things and understand how others are thinking. All right. What qualities does a person need to have to be a good communicator? I believe the qualities that you need to have, absolutely, that you need to have in being a good communicator are, first of all, you need to have great clarity when you speak so that the audience understand what you're trying to say. Second of all, it should be easy to understand. And most of all, the speaker should have confidence in the topic he or she is discussing about. All these three things, I believe, will make a person the best speaker there is. Okay, and can you think about the future possibilities?
I mean, in terms of communication, do you think most of the communication are going to be held online or offline, and why? I believe when lockdown came, everybody started to believe that our future communications would start taking place in through online platforms only. But I believe that in future we are going to see people appreciate more and more in-person meetings and physical and physical in-person meetings rather than online meetings, because it plays an important role in getting to know other people, which online meetings has created a barrier for somewhat way. So I believe in the future we'll see more offline meetings, which I believe is a very great thing since it helps humans to socialize and be connected to each other. Offline meetings limit us to our rooms and cubicles only. Okay, so thank you very much. This is end of your speaking. I wish you all the best for your future. Thank you. तो सारे पैरामीटर्स के फीडबैक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं फ्लुएंसी के ऊपर एम्फिसाइज करना चाहता हूँ। देखो स्टूडेंट, कैंडिडेट का फ्लुएंसी लेवल कितना अच्छा है, नेचुरल फ्लो है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। स्टूडेंट ने बीच में पॉजेज भी लिए हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि पॉजेज दो तरीके के होते हैं। एक वो पॉज होता है जो हम आइडिया लेने के लिए सोचते हैं, एक वो पॉज होता है जो हम ग्रामर बनाने के लिए सोचते हैं। तो कैंडिडेट ग्रामर बनाने के लिए पॉज नहीं ले रहा है, वो आइडियाज़ को कलेक्ट करने के लिए बीच बीच में कहीं पे नेचुरल पॉजेज ले रहा है, तो जो कि उसका कोई बहुत ज़्यादा आपकी स्पीकिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इवन आपका स्पीकिंग ज़्यादा नेचुरल लगती है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में स्टूडेंट ने कोई बहुत छोटी मोटी एस वगैरह की गलती करी है, अदरवाइज उसके जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का बहुत बढ़िया। आपकी जो ग्रामर देखी जाती है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से देखी जाती है कि आपका जो टेंस का कंस्ट्रक्शन है वो एडवांस लेवल है, वो कॉम्प्लेक्स है, कितने कॉम्प्लेक्स आपने यूज़ किया है। आप देखना, जब भी कैंडिडेट आंसर कर रहा था तो वो जैसे ही स्टार्ट करता था आंसर, उसका जो स्टार्टिंग वाला सेंटेंस होता था वो कितना लंबा जाके इज वो कहाँ पे जाके दे रहा है। सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन थी वो बहुत ही एडवांस लेवल की है। मतलब जब भी आंसर को ओपन करता है कैंडिडेट तो उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें सारे क्वेश्चन का नाउन डाल के कहाँ पर जाके वो मेन वर्ब को ले रहा है। तो मतलब काफ़ी लंबा नाउन फ्रेज बना के वो इंक्लूड कर रहा है। तो बहुत बढ़िया, कम से कम इसका 7 या 8 के बीच में ग्रामर का रेंज देखने को मिलेगा। प्रोनाउंसिएशन में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टूडेंट की। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, कैंडिडेट ने 1 मिनट 40 सेकंड का क्यू कार्ड बोला है उसके आसपास, तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि हमें 2 मिनट का क्यू कार्ड बोलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपका जो एग्जामिनर है वो आपको पहले भी स्टॉप करवा सकता है। अब हम पार्ट 3 की बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने उसको इंटरनेट के बेनिफिट पूछे थे, कम्युनिकेशन में क्या बेनिफिट है, तो स्टूडेंट ने मेरे को सिर्फ एक ही बेनिफिट बताया था। तो मैंने दोबारा से उसके पूछा कि कुछ और बेनिफिट भी आप बता सकते हो, तो उसने एक और बेनिफिट भी मेरे को बताया। आपका एग्जामिनर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं होती कि आपका एग्जामिनर ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है या कम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है उससे आपके बैंड स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर लॉजिकल तरीके से रीजनिंग के साथ देना होता है। और बीच में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ऑनलाइन स्पीकिंग में सबसे बड़ी मुश्किल होती है आपकी जो इंटरप्शन होती है। आपने देखा होगा जैसे ही उसने क्यू कार्ड खत्म करने का सोचा तो वो फिर से बोलना शुरू हो गई कैंडिडेट, तो मैंने बीच में उसको इंटरप्ट कर दिया। इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पे स्पीकिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा 1 सेकेंड का डिले जरूर होता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन स्पीकिंग का एक्सपीरियंस लेना भी बहुत जरूरी होता है। और उसके अलावा पार्ट 3 के एक क्वेश्चन ऐसा था जो स्टूडेंट को सुनाई नहीं दिया था, तो उसने दोबारा से बोला कि मुझे सुनाई नहीं दिया, स्ट्रेट वे उसने बोल दिया। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि स्टूडेंट एटीट्यूड दिखा रहा था, उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया एग्जामिनर को। देखो भाई, ये कुछ नहीं होता है। आप एग्जामिनर को रिस्पेक्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड कितना अच्छा है। तो उसने पूछा, मैंने दोबारा से उसको क्वेश्चन बोल दिया, तो उसने अच्छा उसको रिस्पॉन्स कर दिया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट आउट परफॉर्म्ड थ्रू आउट ऑल द 3 प्रोसेसेस एंड आई बिलीव दैट शी डिजर्व मोर देन 7.5 बैंड इन दिस इंटरव्यू। आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके अकॉर्डिंगली कैंडिडेट को कितना बैंड स्कोर मिलना चाहिए। किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। किसी को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है
तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।